Good afternoon, Rishikesh. Yes, sir. Good afternoon, sir. So you are graduated from NIT Patna. Sir, yes, sir. Currently, I am in final year. You are in the final year. Yes, Okay. So can you give me the three reasons why we should select you for the BARC? sir. I think I qualify for this role because I have a good knowledge of electrical engineering, Hmm. and also I am eager to learn. I have also some interest in physics also. That's why I think Atomic Research Center, Bhabha Atomic Research Center, will be a good match for me. So basically you want to join the research field only, or you have any other ambitions, like you want to pursue MTech, or you want to join any PSU? Sir, either BARC or PGCIL. These are my two choices. Okay. BARC or PGCIL is there two Yes. choices. Okay. Okay. So Rishikesh, can you tell me the three-stage program of Indian Atomic that is designed by the Homi Jagir Baba? What was that? Sir, three-stage program. Yes, No, sir, I am not aware of that. you are not aware about this. Okay. Can you tell me the difference between the thermal reactor Yes, sir. and the fast reactor? Sir, thermal reactor uses D2, means heavy water for cooling, and the fast breeder reactor. Uh, You are not aware? Okay. Can no, you sir. tell me the role of control rod? Sir, control rods absorb the extra neutrons released during the fission process. They keep the reaction in control so that it does not go, means it does not release a tremendous amount of energy. The energy is released in controlled way. Okay. If the energies become uncontrolled, then what would happen? Sir, an explosion may happen, like we see in thermonuclear bombs and other things. Oh, okay, okay. Means the fission process will be unstoppable by this. Rishikesh, what is your favorite subject? Sir, control system And and machines. electrical machine. Okay. Yes, Suppose if I apply the pulse type of waveform in the transformer, which type of waveform I got from the output side? sir, if we apply pulse, Yes, this type of pulse, the positive pulse waveform. square pulse. Yes, square pulse. Uh, for square pulse, sir, we will get sudden spikes of voltage, sir. Sudden spikes voltage. Yes, Only positive one, or you will get the positive as well as the negative? both, sir, positive and negative both. Positive and negative, what we're getting. Yes, yes, Okay. Suppose if I apply the DC in the primary of the transformer, what yes. would happen? Nothing will happen, sir. No induced EMF on the uh, secondary side. Okay. No, no, no. This is perfect that no EMI would be induced in the primary as well as in the secondary side. So Yes, will there any effect will be there? Which winding would got damaged? Primary winding or secondary winding? sir. Prime, primary winding will get damaged. Can you tell me what is the difference between PI, major difference between PI controller and PD controller? Sir, PI controller and PD controller. PI is a proportional and integral controller. It improves the gain of the system and the steady state response of the system. While PD controller is the proportional and derivative controller, it improves the gain as well as transient response. So the main difference is one, the PI controller is used to get stable steady state output,
while PD controller is used to get good transient response. So absolute stability is based upon the transient performance of Steady state performance. Very good. So can you please tell me once more what are your favorite subjects? So control system and machines. Machines. Yes, sir. So this BARC interviews through GATE or you are get additional written exam? GATE, sir. Through GATE. Great. What is your GATE score? Sir, my score is 746. Rank was 160. So in machines, whether you are comfortable with a static portion or a dynamic portion? Sir, I'm comfortable with both. Great. So tell me what are the advantages of having parallel operation of transformers? Sir, parallel operation of transformers can help us use more load, means it can supply to more load, and it can help in providing मीन्स शेयरिंग ऑफ लोड, मतलब सर उससे हम लोग लोड शेयर कर सकते हैं इजीली, बहुत ज्यादा जो भी लोड है. नुकसान भी है पैरेलल ऑपरेशन का? नुकसान सर मोस्टली यही है, मतलब अगर उसको ठीक से कनेक्ट वगैरह नहीं किया तो फिर उसमें हो सकता है, लाइक सर अगर वेक्टर ग्रुप सेम नहीं रहा, फेज सीक्वेंस सेम नहीं रहा, तो उसके कारण गलती हो सकती है. पोलैरिटी अगर सही नहीं रहा तो, एंड अगर वोल्टेज रेशियो सेम नहीं रहा तो सर्कुलेटिंग करंट भी फ्लो हो जाती है. स्टार्ट सर 11 के साथ सर ऑडिबल? आपकी ये वॉइस क्रैक हो रही है थोड़ी. अभी देखो, अभी ऑडिबल हूँ क्या? यस सर. तो अगर बात करते हैं और मेरे को कनेक्ट करना है स्टार डेल्टा 11 के साथ मैं पैरेलल करना चाहता हूँ डेल्टा स्टार 11 की, स्टार डेल्टा 11 डेल्टा स्टार 11. सो क्या मैं ये कर सकता हूँ अगर सेम वोल्टेज की? तो नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? दोनों सेम ही ग्रुप से तो बिलोंग कर रहे हैं. नहीं सर, स्टार डेल्टा 11 और डेल्टा स्टार 11 अलग अलग होते हैं. अलग अलग होते हैं, अलग अलग फेजर ग्रुप से बिलोंग करते हैं. 30 डिग्री नहीं सर, सॉरी, सेम ही है. सेम ही है तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्या सर? हाँ, मैं इन्हें पैरेलल में ऑपरेट करा सकता हूँ. एक स्टार डेल्टा 11 को डेल्टा स्टार 11 के साथ पैरेलल में ऑपरेट कराया जा सकता है. हाँ सर, लेकिन फिर वो भी हमें देखना रहेगा कि वोल्टेज रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं. मीन सर इधर हम लोग जैसे अगर स्टार डेल्टा 11 आइडेंटिकल यूज, वोल्टेज रेशियो है, सब कुछ सेम. नहीं नहीं सर, तब नहीं यूज कर सकते. अब नहीं यूज कर सकते. नहीं सर, तब ऐसा क्या प्रॉब्लम बैटरी आएगा उसमें? सर, क्योंकि सर जैसे स्टार डेल्टा 11 है, तो इधर हम लोग अगर मान लीजिए सर दे रहे हैं 440 केवी, तो इधर सर 440 केवी का वो मतलब लाइन वोल्टेज है, वो फिर फेज में कन्वर्ट होगा और वो फिर ट्रांसफर होकर इधर आएगा. लेकिन इधर जो डेल्टा स्टार 11 है उसमें 440 ही फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज है, चल वो मान फिर लो अलग लाइन ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज देगा. है, कर सकते हैं. क्या आइडेंटिकल सर? लाइन वोल्टेज है 11 kV by 440 वोल्ट, लाइन टू लाइन एचपी और एमपी दोनों यस सर. ट्रांसफॉर्मर है. तो क्या तब कर सकते हैं स्टार डेल्टा 11 को डेल्टा स्टार 11 के साथ कनेक्ट कर सकते यस सर, कर सकते हैं. हैं? कर सकते हैं. यस सर. ठीक है. Rishikesh, Yes, sir. what are your favorite subjects related to electronics side? Electronics, sir, I will say digital electronics. Okay. Only digital. Yes, sir, digital and signal and systems. Yes. Okay. Can you explain me the function of multiplexer? Sir, multiplexer is used to, What? sir, मतलब multiplexer has many inputs and it gives output as one. Means it is used to select different inputs
at a time. Means it can give like there are 4 inputs. Can you give me and we use 2 real-time example that we regularly use? Mux real-time example. Mux real-time example is Mux. TV remote. Yes, sir. TV remote. Sir, TV remote is a gearbox mux, can be right? called. Achha. Yes, sir. TV remote is a From many mux. channels, we can choose one channel. Yes, sir. Can you differentiate microprocessor and microcontroller? What, sir? Microprocessor and microcontroller. What is the difference? Sir, microprocessor and microcontroller. You've Sir, not studied? I don't. No, sir. It's not in the Not studied. syllabus of GATE. It's not there in the syllabus. BARC exam is having microprocessor also, right? I didn't give that exam. I got to GATE, so I don't have idea about that. Okay. What is virtual ground concept in op-amp? वर्चुअल ग्राउंड सर आइडियल ओप एम्प में जब हम लोग सर इनपुट देते हैं निगेटिव टर्मिनल को कुछ इनपुट दे रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को भी कुछ इनपुट दे रहे हैं तो सर निगेटिव फीडबैक के टाइम पे ये होता है कि जो भी इनपुट पॉजिटिव साइड में मींस पॉजिटिव टर्मिनल पे वही आ जाता है निगेटिव टर्मिनल मींस माइनस वाले पार्ट पे तो इनपुट माइनस ये हम लोग उससे कैलकुलेट करते हैं फिर आगे। ओके, ये CMRR का सिग्निफिकेंस क्या होता है? क्या सर? CMRR आप में CMRR बोल के कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं ना? CMRR फुल फॉर्म पता नहीं आपको? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो सर उसका आइडिया नहीं है। ये तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है ना भाई? यस सर, I'm not very fluent in analog. Okay, not fluent in analog. So measuring instruments के बारे में कुछ आइडिया है? Measuring instruments like potentiometer is a measuring voltmeter, ammeter, ये सब बोल रहे हैं सर आप? No, I'm asking. There are various measuring instruments ना, like PMMC is there, moving iron is there. Power measurement कैसे करते हैं? Voltage measurement कैसे? ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। Yes sir, there are PMMC and पावर मेजरमेंट के लिए क्या है इंस्ट्रूमेंट? पावर मेजरमेंट के लिए सर वाट मीटर हो गया, लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है और ओके, हाई रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं? हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट इंसुलेटर वायर ऐसा है ना, इंसुलेशन को मेजरमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है ना, उस रेजिस्टेंस को क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? मल्टीमीटर। नो, मल्टीमीटर यूज करते क्या? इंसुलेटिंग केबल को ओके किलो ओम्स मेगा ओम्स में रहते हैं ना वो। यस सर। अरे ये तो बहुत बेसिक चीज है ना, हाई रेजिस्टेंस हम लोग किससे मेजर करते हैं? लो रेजिस्टेंस के लिए लेस देन 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए लो रेजिस्टेंस नो आइडिया। वेरी लो रेजिस्टेंस लाइक 1 ओम, लेस देन 1 ओम। ओके सर नहीं सर, आइडिया नहीं है। ओके